Now, the second very important feature of the Indian Constitution is that it draws from various sources. Well, the Constitution of India has borrowed most of its provisions from the constitutions of various other countries, as well as from the Government of India Act of 1935. And therefore, Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. Now, this is a fact that we must remember, that the major part of the Indian Constitution is borrowed from many constitutions of the world. In fact, the biggest part of the Indian Constitution is based more or less from the Government of India Act of 1935, and therefore Government of India Act of 1935 becomes a very important to understand. And as I have said, I have already made a tutorial on this act and it is already been put up on YouTube. You will find the link in the description box below as well as on I button. So please, if students wants to understand why Government of India Act of 1935 is very important, then you must go and check that tutorial. So moving forward, therefore the Indian Constitution is drawn from various sources and we have compiled together and we have taken everything whichever needed for our country. And therefore Dr. Bhimrao Ambedkar have rightly said that the Indian Constitution has been framed after ransacking all the known constitution of the world of that time. So जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं और समझना चाहते हैं, तब हमें ये पॉइंट भी समझना है कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद ही बना है। जो कमेटी सेटअप की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन लोगों ने सारी दुनिया के उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की गई। उसमें से जो हमें चाहिए, जो एप्लीकेबल होगा हमारे देश के लिए, वो हमने वहाँ से उठा लिए। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बना भारत का संविधान बनने में, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 का जो एक्ट बना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से प्रोविजंस हमने वहाँ से ही उठा लिए थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सही कहा था कि जो भारत का जो संविधान बना है वो एक दिन में नहीं बना, वो सारे संविधान को समझ के, वो सारी दुनिया के संविधान को समझने के बाद ही भारत का संविधान बना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, now let us understand which are the parts which we have taken from other parts of the Constitution. Let me talk about the first. First is the structural part of the Constitution, and this structural part of the Constitution is to a large extent directly derived from the Government of India Act 1935. So the structural part of the Indian Constitution is actually derived exactly from the Indian Act of 1935, from the Government of India Act of 1935. जो स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमने लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से डायरेक्टली लिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज डिराइव्ड देयर इंस्पिरेशन from the American and Irish Constitution. So the philosophical part that basically talks about fundamental rights and directive principle of state policy, we have taken the inspiration from the American and the Irish Constitution. जो हमारा philosophical part of Constitution बना, उसमें basically fundamental rights आते हैं और directive principle of state policies आते हैं। ये दोनों चीज़ों का जो inspiration ये है वो हमने अमेरिका से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द पॉलिटिकल पार्ट
which talks about cabinet form of government, which talks about relationship between the executive and the legislature, has directly taken from the British Constitution. और जो पॉलिटिकल पार्ट है जिसमें कैबिनेट सरकार कैसी बनेगी, कैसी चलेगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है. और इसके अलावा the other provisions of the constitutions have been drawn from the constitutions of Canada, Australia, Germany, South Africa, Japan, and so on. So these are the countries and these are the references from where we actually have drawn a lot to make our own constitution. So this is all about the second salient features of Indian Constitution.